हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एडवाइजर में आपका स्वागत है। 1200 से 1300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स यानी राजनीति शास्त्र। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, पॉलीएंड्री पॉलीएंड्री यानी बहुपति प्रथा। अ पर्सन हैविंग मोर देन वन वाइफ एट अ सेम टाइम, पॉलीगैमिस्ट पॉलीगैमिस्ट यानी बहुपत्नीवादी। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड ऑफ और वाइफ एट द सेम टाइम, पॉलीगैमी पॉलीगैमी यानी बहुविवाह। अ पर्सन हु नोज and is able to use several languages, polyglot यानी बहुभाषी। a flat shape with at least three straight side and three angle and usually five or more, polygon यानी बहुभुज। next, one who believes in a plurality of gods, polytheist यानी बहुदेववादी। full of people, populous यानी घनी आबादी वाला। a place where ships load and unload goods, port यानी बंदरगाह। something that can be carried easily, portable यानी आसानी से साथ ले जाने योग्य। a collection of drawing documents etc that represent a person's, especially an artist work। portfolio यानी पेटिका। occurring or coming into existence after a person that। posthumous यानी मरणोपरांत। a child born after the that of its father। posthumous child यानी पिता के मरणोपरांत पैदा हुआ बच्चा। a medical examination of that body, postmortem यानी शव परीक्षा। delay an event to a letter that or time, postpone यानी स्थगित करना। a note appended to a letter after the signature, postscript यानी उपसंहार। safe to drink water। portable यानी पीने योग्य। a liquid with healing, magical और poisonous properties। potion यानी पेय औषधि। a mixture और dried flowers and leaves used for making a room smell। potpourri यानी सुगंधित मिश्रण। नेक्स्ट है one who values practicality, pragmatic यानी व्यवहारवादी। a previous case that might serve as an example or guide in subsequent situation। present यानी मिसाल देना या मिसाल। a very steep or overhanging rock face or cliff on a mountain। precipice यानी खड़ी चट्टान। an animal that lives by killing and eating other animals। predator यानी परजीवी। something that precedes and indicates the approach of something or someone। predecessor यानी पूर्वज। we are expecting a good monsoon this year। predicting यानी पूर्वानुमान करना। and introduction to a book, especially one that explains the author's aims। preface यानी प्रस्तावना। to be biased against prejudged यानी पक्षपातपूर्ण। an action or event that happens before another important one and forms an introduction to it। prelude यानी प्रस्तावना। the first public performance of a musical or theatrical work or the first showing of a film। premiere यानी प्रथम प्रदर्शन। a strong feeling that something is about to happen, especially something unpleasant। premonition यानी पूर्वाभास। to get ready, prepare यानी तैयार करना।
फिंट यानी प्रिटेंडेड अटैक अर्थात छल या भुलावा। नेक्स्ट है टू मेक एवेसव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। प्रिवेरिकेट यानी छल कपट करना। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ लॉयंस। प्रिड यानी शेरों का समूह। राइट और एडवांटेजेस अवेलेबल टू अ पर्सन। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड। प्रोबेशनर यानी काम सीखने के लिए नियुक्त। नेक्स्ट है पुट ऑफ फॉर अ फ्यूचर टाइम। प्रोकास्टिनेट यानी टालना। द आर्ट ऑफ डीलिंग प्रोकास्टिनेशन टालमटोल। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज। प्रोडिजी यानी विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। अ हाई डिग्री ऑफ स्किल प्रोफिशिएंसी यानी निपुणता। अ जनरल व्यू ऑफ पर्सन कैरेक्टर प्रोफाइल यानी बाह्य रूपरेखा। रिक्लेसी एक्सट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्रोफ्लिगेट यानी अति अपव्ययी। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कलेक्टिवली। प्रोलेटरिएट यानी श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। प्रोलिफरेशन यानी प्रसार या फैलाव। एंड इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क। प्रोलॉग यानी प्रस्तावना। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोलॉग्ड यानी दीर्घकालीन। अ पीस ऑफ वुड मेटल etc used for supporting something or keeping it in position। कीपिंग इन पोजीशन। प्रॉप यानी टेक या सहारा। नेक्स्ट अ पर्सन सेंड बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेजेस फ्रॉम गॉड। प्रोफेट यानी पैगंबर। द एक्शन ऑफ ड्राइंग और पुशिंग फॉरवर्ड्स। प्रोपल्सन यानी संचालक शक्ति। अ पर्सन हु हैज बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। प्रोसेलाइट यानी धर्मांतरित व्यक्ति। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले। प्रोटागोनिस्ट यानी नायक। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग्स। प्रोटोकॉल यानी नियमों की प्रणाली। द फर्स्ट डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर कॉपीड और डेवलप्ड। प्रोटोटाइप यानी नमूना। फूड फॉर्म एनिमल्स। प्रोवेंडर यानी चारा। कंसर्न फॉर वंस टाउन एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुप्रेशनल यूनिटी। प्रोविंसिलियम यानी प्रांतीयता। अ पर्सन हु मूव्स stealthily about or loyaler near a place with a view to committing a crime। प्लॉवलर यानी शिकार की खोज में घूमने वाला। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेड्स by means of opinion poll। सिफोलॉजिस्ट यानी चुनाव विश्लेषक। a fictitious name especially one assumed by an author। pseudonym यानी उपनाम। a scientist trained in physiology। फिजियोलॉजिस्ट यानी मनोविज्ञानी। the scientific study of the mind and how it influences behavior। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज। पंटियस यानी अति शिष्टाचारी। अ पर्सन हु गैम्बल्स प्लेसेस अ बेट और मेक अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। पंटर यानी जुआरी। टू रन आफ्टर परस्यू यानी
पीछे लगे रहना. नेक्स्ट, decay of orna decay of organic matter producing a fetid smell. पुट्रीफाई यानी सड़ना. नेक्स्ट, an obsessive desire to set fire to things. प्रेमेनिया यानी आग लगाने का पागलपन. साउंड मेड बाय डक, क्वैक क्वैक यानी बतख की आवाज. अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगल एंड इनक्लोज बाय अ बिल्डिंग. क्वाड्रेंगल यानी चतुर्भुजाकार. एनी क्रिएचर विथ 4 फुट. क्वाड्रपेड यानी चौपाया. रिजेक्ट एंड इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीड्यूर. क्वैश यानी रद्द करना. अ शेक और ट्रेम्बल. अ शेक और ट्रेम्बल इन पर्सन्स वॉइस. क्वेवर यानी थरथराना. अ फीदर यूज्ड एज अ पेन. क्विल यानी पंख की कलम. एन इवेंट विच हैपेंस वन इन 5 ईयर. क्विवेनियल यानी पंचवार्षिक. टू द एटमोस्ट और मोस्ट एब्सोल्यूट एक्सटेंड और डिग्री. क्वाइट यानी पूरी तौर से. नेक्स्ट, अ पर्सन preoccupied with an unrealistically optimistic approach to life. क्यूसाइटिक यानी ख्याली. A person who is good at telling story in an interesting and amusing way. रैकनेटर यानी मजेदार कहानियां सुनाने वाला. The act of spreading outward from a central source. रेडिएशन यानी विकिरण. A person who advocates complete political or social change. रेडिकल यानी उग्र सुधारवादी. नेक्स्ट, मेडिकल डॉक्टर्स who specialize in diagnosing disease using X-ray, CT scan and ultrasound. रेडियोलॉजिस्ट यानी विकिरण चिकित्सक. द साइंस डीलिंग विथ एक्सरे एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज. रेडियोलॉजी यानी विकिरण चिकित्सा विज्ञान. हैविंग अ स्मेल और टेस्ट. रैंसिड यानी बासी. characterized by bitterness और resentment. रैंकोरस यानी शत्रुतापूर्ण. टू फ्री प्रिजनर और पेमेंट. रैंसम यानी फिरौती. ग्रीडी फॉर मनी. रेपेशियस यानी अतिलोभी. रिडक्शन इन टैक्स और रेबेट यानी छूट. टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस. रिकेंट यानी मुकर जाना. हेलो ऑब्जेक्ट यूज्ड. रिकेंट यानी मुकर जाना. अ हेलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग. रिसेप्टेकल यानी पात्र. नेक्स्ट है, अ पर्सन हु withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. Recluse यानी वैरागी. Adjust or make right, correct, amend, rectify यानी सुधारना. When something moves in straight line. Rectilinear यानी सीधा. A process involving too much official formality. रेड टैपिश यानी लाल फीताशाही. what which is no longer used. redundant यानी अनावश्यक. an act when people vote in order to make a decision about
a particular subject or policy rather than voting a person. Referendum यानी जनमत संग्रह. An involuntary action under a stimulus is described. Reflex यानी अनैच्छिक क्रिया. A system which is observed to do progress. Reform is यानी संशोधनवाद. Next है a person who has been forced to leave his country home because there is a war or for political, religious or social reasons. Refugee यानी शरणार्थी. Dress with medals, ribbons worn at officially ceremony or symbols of royalty. Regalia यानी पदक या तमगा.